Good morning. Thank you very much for invite us. कॉफ़ी विद CMM सेमिनार और आज का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट है। फरजाना अफजल बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं अवेयरनेस के लिए, स्पेशली कम्युनिटी की लेडीज़ को बहुत अच्छी अवेयरनेस है ताकि हम ये मालूमात हमारे लिए, हमारी लेडीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होगी इंशाल्लाह। और इस तरह के जो ये सेमिनार अरेंज करती हैं और मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ सब फरजाना के वर्क को और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये बहुत अच्छा काम करती रहेंगी और कम्युनिटी को प्रमोट करती रहेंगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Good morning ji. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me for your coffee group this morning. I'm hoping to talk on substance misuse, in general terms drug addiction issues in the community on the whole, because the issue is global, not related to any specific country or community. However, being in South Asian communities or BAME in other, say, British Asian and minority ethnic groups, there are specific issues and specific barrier to access the service, and also there are underlying factors, and also we have specific techniques or strategies which we can focus on how to tackle this, especially in our communities, BAME communities, which is a significant part of our multi-ethnic, multicultural society in Britain today. So I hope that we spread the message in a positive way. And at the end of the presentation, there will be chance for question answer. And I hope for the participants to be more active and interactive. Thank you. Assalamualaikum. Today we're having coffee with CMM event. It's a wonderful event for our community. Farzana Afzal has organized it and she's doing an absolutely wonderful job. Doctor has been invited who will give us a talk on the extent of drug abuse in South Asian community. So I think it's a wonderful lecture to come and attend. So please come over and be aware and learn something. Thank you. Hello, assalamu alaikum. Hello to everybody. I'm in this lecture room here with the CMMC about drug addiction with Farzana here and Dr Iqbal Naeem. I found it very, very interesting. There's a lot of knowledge about it, and awareness about the different types of drugs. So medically used as well. Those type of drugs, addictive ones, abusive ones, and also I think we should talk more about herbal side to replace those drugs because some people cannot stop. You know, for example, there are people that it could be due to family reasons, and that could cause mental issues. They can't stop, they hide, they don't want to tell you. But it was a lovely coming here today. I really enjoyed it. Thank you so much, and I've met so many nice young ladies. We've had a good session, and thank you so much to Farzana. Thoda sa brief introduction. As you know, I'm Farzana Afzal, so everybody knows, so I don't need to introduce myself again. So at Creative Minds Media, we are dedicated to women empowerment and community development in the UK. We want to bring positive changes through creativity, innovation and collaboration. Through our programs, we want to create a platform for women to express themselves, grow and make a meaningful impact on their communities. And other than that, at Creative Minds Media, our vision है, we envision a future where women are equal participants in all aspects of life. We strive to build a society that recognizes and values women's contributions, where their voices are heard and their rights are respected. We believe that by empowering women, we empower entire communities, leading to a more equitable and inclusive world. तो आज मैं वेलकम करूँगी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्यूज इन साउथ एशियन कम्युनिटीज़। उसके लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इकबाल नईम साहब, उनको हम सब वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का माशाल्लाह आई वुड लाइक टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। डॉक्टर नईम इकबाल नईम साहब हैज़ बीन वर्किंग विद दी Dr. Muhammad Iqbal Naeem Saab
you're consultant psychiatrist, senior lecturer, or associate professor in psychiatry in the University of Manchester, UK. Dr. Iqbal Naeem Sahab, you are a consultant in general adult psychiatry with special interest in addictive behavior. You are an international fellow of American Psychiatric Association as well. And you have an extensive experience of dealing with working age group, psychiatric disorders, and complex issues in addiction psychiatry. Dr. Naeem Sahab has focused his research studies on dual diagnosis in acute psychiatric disorders, deliberate self-harm, and suicidal behavior, and prevalence of substance misuse in the community from a general psychiatric perspective. Dr. Naeem, you have contributed in training and education of senior psychiatric trainees and career grade psychiatrists. You have also been working with the Royal College of Psychiatrists, London, and contributed as being on many committees. Currently, you are a member of Equivalence Committee within the Royal College of Psychiatrists, and your role with the General Medical Council UK GMC and the Royal College of Psychiatrists has won Best Evaluator Award. And you are UK GMC accredited Educational and Clinical Supervisor, Northwest. Health Education England, HEE, has awarded you with the Best Psychiatric Tutor Award in year 2020. And Dr. Saab was also awarded Lancashire NHS Trust a Best Supervisor of the Year Award in 2021. So please welcome. No, even though confidentially, it doesn't matter, but it is in our माइंड है कम्युनिटी में, ये पता चल जाएगा दूसरों को। और इसी तरह उसकी जो है क्या कहें उसको टैकल करने का अंदाज डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल इन माय एरिया प्रैक्टिस एक्चुअली लंकाशायर, आई नो वेरी रिसेंट एग्जांपल ऑफ अ मदर whose son was very brilliant child who was in the second year in university, so he was heavily in cannabis and then controlled. He developed some mental health issues as well, was on medication. So after quite a while, he's slightly under control, and she got her son a wife from Pakistan. So they कहेंगे शादी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा. So hiding from the society, hiding from the family over there, so they married their son. So this sort of approaches you usually have, although you all realize that this is not the solution. Because it's multifold the problem rather than solution. So this is where I say our communities have responses in a different way. Our family and community, maybe extended relative or the whole community, because you are aware of that. We are sitting here as a part of community. Although we are part of main community in Britain, we are integrating with them, but still we are sitting here because we have our special needs, special values, special cultural backgrounds, etc. So ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है. इसको समझे बगैर इसको जब समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे. अच्छा, पॉवर्टी का मैंने कहा है तो हॉस्पिटल फिगर्स ये बताती हैं कि 50% से ज़्यादा एडमिशन वो कम रिलेटेड टू अल्कोहल और ड्रग इश्यूज, उनमें 20% ऐसे हैं दे कम फ्रॉम अ लोअर कम्युनिटीज, जैसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक. पॉवर्टी का ये मतलब है कि तो पॉवर्टी प्लेज अ लॉट बिग रोल, बिकॉज जब कुछ होगा नहीं करने को, दे विल डाइग्रेस, दे विल fall prey to other behaviors right from the school. टीनेजर से लेके हमने देखा स्कूल जो हाई स्कूल है वहाँ से बच्चे जो हैं वो मिसगाइडेड होना शुरू हो जाते हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ रॉन्ग ग्रुप्स. ठीक है, तो उसके बाद है कि ये बेल कम्युनिटी में हमने ये भी देखा है तो मेंटल हेल्थ रेट भी ज़्यादा है. साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स और साइकेट्रिक प्रॉब्लम themselves make a basis for people. They become the target, they become quite vulnerable, and they can be approached by drug dealers because we don't know if you are
but a drug dealer and drug addict will know how to connect. They are all over spread. We know that supermarkets, on the streets, on the libraries, in the prisons even prisons. We see the most protective areas. We see people access drugs and get. Some people go to prison with a crime or something. They were not drug addict, but they were हमारे spicy food है. जबकि हम देखते हैं अगर आप डेली सुबह शाम वही खाते रहेंगे, becomes unhealthy. Not accessing any vegetables, any fruits, or not accessing what is balanced diet. प्राइमरी हेल्थ केयर जीपी के पास नहीं जाना. आप उनको बताते रहते हैं हम कि आप ईयरली ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक भी हैं, अगर दवाई पे हैं तो ज़्यादा है, बट नहीं, अनलेस के यू हैव सम प्रॉब्लम सीरियस. फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल से जब चेस्ट पेन शुरू होगी, फॉर एग्जांपल एस्थमा सवीर हो गया, शुगर इतनी हाई होगी कि अब आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे. सो ये दीज आर इश्यूज. टू बी ऑनेस्ट वी डोंट necessarily say okay this is अब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड के, कई लोगों को कहा कि भी एक्सरसाइज किया करो, डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं. सो दिस इज योर टाइम बेस्ट स्पेंट, यू हैव टू फाइंड टाइम. ठीक है. सो दीज आर दी इश्यूज कि अब आप इस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो तब निकालेंगे जब टाइम आप रिवर्स नहीं कर सकते, जब कुछ हो जाएगा. ब्लैक, एशियन एंड एथनिक minority ethnic groups, so सारे तो we are part of that. अगर आप एशियन भी लें उसमें भी we are one fraction. यो एशिया में चाइना भी आ रहा है, इंडिया और भी मुल्क और, but we will see. तो इसमें first of all I would like to just extent जो बताता हूँ ethnicity के point of view जो मैंने literature से भी research लिया है कि एक तो होता है drug addiction और एक है drug abuse. क्योंकि बहुत से लोग अब यूज़ कर रहे होते हैं और एवरी नाउ एंड अगेन आपने सुना होगा कैनबिस, अल्कोहल भी पार्ट ऑफ दैट ड्रग ही है, और इस तरह दूसरी ड्रग्स वो हार्ड ड्रग्स से ज़्यादा कोकेन, स्टिमुलेंट्स. और कुछ लोग होते हैं वो उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं. डिपेंडेंट का मतलब वो उसके बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो एक्सट्रीम डिग्री है ना. तो जो फैक्ट्स इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स या फिगर्स जो अब्यूज़ हो रहा है सोसाइटी में, उसमें पूरा जो ड्रग सोसाइटी में देखें, वाइट में 12% इन मैन और 6% इन वेमेन, और ब्लैक कम्युनिटीज़ में 14% इन मैन एंड 10% इन वेमेन. उसके बाद एशियन आते हैं, जैसे मैंने कहा सारा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, और उस कम्युनिटी में 6% से कुछ कम है वो मेन में है और 1% वेमेन. एशियन में वेमेन की काफ़ी कम है, लेकिन स्टिल इट इज़ सिग्निफिकेंट. उसके बाद मिक्स रेस कम्युनिटीज़ हैं हमारे अंदर, ये भी आपने नोट किया होगा, उनमें 8% मैन में और 6% वेमेन. ये जो ड्रग अब्यूज़ है जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद आती है डिपेंडेंस लेवल, जो लोग बिल्कुल इसके बगैर फंक्शन ही. डिपेंडेंस है कि जब एब्सोल्युटली उस पर डिपेंडेंट होता है बंदा, उसके बगैर ज़िंदगी स्टार्ट ही नहीं कर सकता, डे नहीं स्टार्ट कर सकता, उसको वीक नहीं चलता, और फिर वो डिपेंडेंस के साथ साथ बाकी चीज़ें उसकी बैकग्राउंड में जानी शुरू हो जाती है, वो उसको एम्पावर कर लेती है. तो एडिक्शन की जो फिगर्स हैं वो ये है कि वाइट मैन में 4%, क्वाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, 4%, और 2% इन वेमेन. ब्लैक कम्युनिटी में 11% इन मैन एंड 4% इन वेमेन. 4% इन मैन एशियन में और 1% इन वेमेन. अगेन मिक्स्ड रेस में 3% इन मैन एंड जस्ट अंडर 1% इन वेमेन. सो ये वो इसकी जो ओवरऑल एडिक्शन का पूल है उसमें से 3% है. बट इट जस्ट आई नो इट इज़ मेन. अगर कोई बंदा इससे अफेक्ट हुआ है, या आपने किसी को देखा है, उसके लिए तो 100% ही हो गया. दिस इज़ मेनली फॉर ओवरऑल, इसको कहते हैं आपके सर्विस डेवलपमेंट कह लें, रिसर्च कह लें. लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो इफ़ यू हैव नोन समबडी, मे बी समबडी लिविंग इन योर स्ट्रीट, समबडी यू नो फ्रॉम रिलेटिव, समबडी मे बी नेक्स्ट डोर, समटाइम यू विजिटिंग हॉस्पिटल यू सीन, और मे बी इन द स्ट्रीट. सो उस वक्त आप समझते हो तो बहुत बड़ा इशू है. कुछ लोगों के इतनी प्रोटेक्टेड सोसाइटी में रह रहे हैं, या उनकी सपोर्ट मैकेनिज्म ऐसी है, या एरियाज ऐसे हैं, दे मे नॉट बी दैट मच अफेक्टेड और लेस अफेक्टेड. बट वी हैव टू ओवरऑल रिव्यू दिस सिचुएशन के अपने अपने तौर पे, क्योंकि अगर आफ्टर वाला ग्रुप उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस होंगे आपके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम इसको क्यों कह रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सोसाइटी का एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्रग्स इज क्वाइट डिफरेंट. ठीक है.
फॉर एग्जांपल इन्होंने दी एग्जांपल कि चाइना है, फॉर एग्जांपल चाइनीज आर एशियन, वी आर एशियन एज वेल, बट आवर जो एटीट्यूड टुवर्ड्स एडिक्शन है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स कह लें, वो डिफरेंट होगा। चाइनीज़ में अगर डिफरेंट वो है तो पंजाब में फॉर एग्जांपल पंजाब, मशरक़ी पंजाब, दे वर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स अल्कोहल इंटेक, जबकि हम पाकिस्तानी पंजाब में या पंजाबी बैकग्राउंड की कम्युनिटीज़ हैं उनमें अल्कोहल कम, मे बी हेरोइन और कैनबिस और दूसरी चीज़ें ज़्यादा हों। जबकि अगर इसमें रिलीजन कम है लेकिन कल्चरल, क्योंकि अगर रिलीजन देखें तो रिलीजन तो सिख और हिंदू इवन मुस्लिम भी सब एडिक्शन तो उसमें मना है, ठीक है ना। तो अगर हम कभी नाम ले भी लेते हैं सिख या मुस्लिम, तो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अदरवाइज आप देखें सिखों में तो स्मोकिंग भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है सिख रिलीजन में, लेकिन एडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जब हम देखते हैं तो वो ओवरऑल कम्युनिटी बेस बन जाता है। तो उसके बाद दूसरे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिटीज़ को, वो है जियोग्राफिकल ओरिजिन। अगेन द सेम, पीपल कमिंग फ्रॉम एफ्रो कैरिबियन ओरिजिन, दे मे बी ऑन स्टिमुलेंट्स या केटामीन है या डिफरेंट, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत सी ड्रग्स के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, सिर्फ ओवरऑल अगर सुने हैं मैं उसके भी क्वेश्चन आप बाद में रखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर सेशन उसके ऊपर स्पेसिफिकली टॉक कर लेंगे। इस तरह स्टिमुलेंट है वो जिसमें कैनब से इसके एग्जांपल हैं, कोकेन है, एम्फेटामीन है, इस तरह की ड्रग्स। और उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटीज, अगर जैसे मैंने कहा सिख बीइंग डिफरेंट टू मुस्लिम फॉर एग्जांपल, तो आपने कभी नोट किया होगा या कभी सुना मीडिया में कि भी सिख कम्युनिटीज गेट टुगेदर द मोर इनटू अल्कोहल, ठीक है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटीज में एज सच तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन आउट ऑफ सेलिब्रेशन सीक्रेटिवली और ये चलता बहुत कुछ और चीज़ें। उसके बाद है कि बेम में या एशियन कम्युनिटीज़ में जेंडर इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एडिक्शन आप देखेंगे मेल जेंडर जो, या जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंट हैं, जो बड़े उनमें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। हाउएवर इट डजंट मीन के हम ये ग्रुप रेलिवेंट नहीं है, आप और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि एज अ सेड यू आर लुकिंग आफ्टर द फैमिलीज। सो अगर मेल भी इफेक्ट हुआ है तो अल्टीमेटली इफेक्ट्स द होल फैमिली। सो उसमें हर बंदे को, हर शख्स को, एवरी इंडिविजुअल, एम आई ओके टू यूज बोथ और जस्ट कंटिन्यू इन इंग्लिश? I have everybody. So every one of us is responsible in every aspect. So we have different roles. ठीक है, तो उसके बाद ये है कि the more important thing to know is that services in the government sector, NHS, which is our main health organization, or private services, they are geared to address these specific issues. But first of all, this needs to be identified by the families, by the individuals, and then unless you access to the service, they won't be able to help. So this is another important factor. But we can also work at a preventive level, कि मामला वहाँ तक जाए ही ना, क्योंकि जिस तरह ये इश्यूज होते हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंटल इशू है, दूसरे फैक्टर्स हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से फैक्टर जो बेम कम्युनिटीज़, एशियन कम्युनिटीज़ को चैलेंजेस कह लें या बैरियर्स कह लें, दोनों तरफ चैलेंजेस इन के इनको कैसे इसका शिकार होते हैं, हाउ दे बिकम प्रे टू दिस प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट बैरियर टू एक्सेस द सर्विस। दोनों तरह पे पॉवर्टी ज़्यादा पाई जाती है, टू बी ऑनेस्ट। लो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट में लो लिटरेसी मीन के वॉन्ट बी एबल टू रीड लीफलेट्स। अब जीपी प्रैक्टिस में जाते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बना के आगे अलग, वहाँ से बहुत से लीफलेट पड़े होंगे। यू विल सी इन जनरल प्रेस, you will see on social media, you will see messages, you go to the hospitals, but if there is low literacy rate, you won't be able to get the message. So this is one of the big issues. Similarly, the message is all about prevention, messages are in the schools, when you go and pick up your children, some messages about where the services are. उसके बाद family response है, very important in our communities, कि ये फलाना क्या कहेगा. So there is a problem, for example, you have noticed an adolescent young man has started university and you have started to realize that now the behavior is changing, the person is not the same, and I think in
more of these adolescent children, mothers are the first, most of the time, I've noticed in my practice, mothers become aware of this first because they spend time in home, they're looking after the child, they know that it's my son, us tarah ka nahi hai pehle ki tarah, he's hiding. Then mothers start hiding that for quite a bit of time, which is a big problem and issue in our community. कि अगर हमने बता दिया कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाते रहें कि शायद वो काम, हालांकि दैट इज एब्सोल्यूट, इवन दो कॉन्फिडेंशियली इट डजंट मैटर, बट इज इन आवर माइंड है कम्युनिटी में, ये पता चल जाएगा दूसरों को। और इसी तरह उसकी जो है क्या कहें उसको टैकल करने का अंदाज डिफरेंट होगा। For example, in my area of practice actually is Lancashire. I know very recent example of a mother whose son was very brilliant child who was in the second year in university. So he was heavily in cannabis and then controlled. He developed some mental health issues as well. Was on medication. So after quite a while, he's slightly under control, and she got her son a wife from Pakistan. So they कहेंगे शादी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा. So hiding from the society, hiding from the family over there, so they married their son. So this sort of approaches we usually have, although you all realize that this is not the solution, because it's multifold the problem rather than solution. So this is where I say our communities have responses in a different way, our family and community, maybe extended relative or the whole community, because you are aware of that. We are sitting here as a part of community. Although we are part of main community in Britain, we are integrating with them, but still we are sitting here because we have our special needs, special values, special cultural backgrounds, etc. So ये चीज़ बड़ी important है. इसको समझे बगैर इसको जब समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे. अच्छा, पॉवर्टी का मैंने कहा है तो हॉस्पिटल फिगर्स ये बताती हैं कि 50% से ज़्यादा एडमिशन वो कम रिलेटेड टू अल्कोहल और ड्रग इश्यूज, उनमें 20% ऐसे हैं दे कम फ्रॉम अ लोअर कम्युनिटीज, जैसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक. पॉवर्टी का ये मतलब है कि तो पॉवर्टी प्लेज अ लॉट बिग रोल, बिकॉज जब कुछ होगा नहीं करने को, दे विल डाइग्रेस, दे विल fall prey to other behaviors right from the school. टीनेजर से लेके हमने देखा स्कूल जो हाई स्कूल है वहाँ से बच्चे जो हैं वो मिसगाइडेड होना शुरू हो जाते हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ रॉन्ग ग्रुप्स. ठीक है, तो उसके बाद है कि ये बेल कम्युनिटी में हमने ये भी देखा है तो मेंटल हेल्थ रेट भी ज़्यादा है. साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स और साइकेट्रिक प्रॉब्लम themselves make a basis for people. They become the target, they become quite vulnerable, and they can be approached by drug dealers because we don't know if you walk, but a drug dealer and drug addict will know how to connect. They are all over spread. We know that supermarkets, on the streets, on the libraries, in the prisons even prisons. We see the most protective area. We see people access drugs and get. Some people go to prison with a crime or something. They were not drug addict, but when they come out, they have been introduced to drugs within the. And then poverty is related to poor housing. Housing issues hote hain, which also can be leading into those. Poor diet, takeaway ले लिया, we are happy. ठीक है कि takeaway से लेते रहे, हमारे spicy food है. जबकि हम देखते हैं अगर आप डेली सुबह शाम वही खाते रहेंगे, becomes unhealthy, not accessing any vegetables, any fruits, or not accessing what is balanced diet. प्राइमरी हेल्थ केयर जीपी के पास नहीं जाना, आप उनको बताते रहते हैं हम कि आप ईयरली ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक भी हैं, अगर दवाई पे हैं तो ज़्यादा है, बट नहीं अनलेस के यू हैव सम प्रॉब्लम सीरियस. फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल से जब चेस्ट पेन शुरू होगी, फॉर एग्जांपल एस्थमा सवीर हो गया, शुगर इतनी हाई होगी कि अब आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे. सो ये दीज आर इश्यूज. टू बी ऑनेस्ट वी डोंट नेसेसरीली सी ओके दिस इज. अब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड के, कई लोगों को कहा कि भी एक्सरसाइज किया करो, डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं. सो दिस इज योर टाइम बेस्ट स्पेंट, यू हैव टू फाइंड टाइम. ठीक है,
सो दीज आर दी इश्यूज कि अब आप इस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो तब निकालेंगे जब टाइम आप रिवर्स नहीं कर सकते, जब कुछ हो जाएगा. About the specific issues, we can, I think, on a participate. I can encourage you to participate through question answer. We can be better placed. But the bottom line is this: by taking a careful approach to the issue around race, culture, and community, because the people who have come from different backgrounds, different geographical origin, different races, and cultural values are very important. They are affecting, because we are here, we are, alhamdulillah, we are participating in the British society, but our cultural values are with us all the time. We are working on them. Our celebrations, our festivals are different, prayers. So according to those, if you take a careful, we use them according to our needs. So that is basically what I wanted to say. And then we can, I also heard that usually your meetup days are different, but it's a weekend. Unfortunately, I didn't have time. So in near future we can arrange some other topics, but from your feedback we can go into extensively or more detail into that particular area. For example, how to identify, for example, and what are the services available, how to prevent this in the society, right? And if somebody is affected with this, any person you know from your family or from your acquaintances, how to help them, how you can participate as volunteers in this. So there are a number of topics in this. So please be vigilant, be proactive. You can always speak to Farzana ji. I'm always willing to be part of this presentation if it is needed. So over to yourselves. Thank you very much for listening. Alright, okay, thank you. देखिए आप साइकेट्रिस्ट आपका शोभा है, साइकेट्री. तो आपने शुरू में कहा ना कि हम लोग हाइड करते हैं, कोई ड्रग यूज़ करता है और इस तरह की चीज़ों को हमारी सोसाइटी में कल्चरली हम कोई हाइड और की अच्छी बात नहीं है. हमारा मज़हब क्यों नहीं इजाज़त नहीं देता, इसकी अच्छी बात है. हमारे यहाँ तो साइकेट्रिस्ट को भी इतना हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, हंसी मजाक में करते हैं. और अभी मजे की बात ये है कि पिछले दिनों कोई डॉक्टर दोस्त से बात हो रही थी, तो मैं उनके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रही थी किसी और की भी. तो उन्होंने कहा कि ये तो डॉक्टर इकबाल का केस लगता है. हम हंसी में साइकोलॉजी क्योंकि साइकोलॉजी की हमारे आपने उनका काम मेरा नहीं कह दिया कि ये दूसरा डॉक्टर है. हमने कि वो डॉक्टर इकबाल का केस है. और एक जो चीज़ मैंने अभी आपको साइकोलॉजी के हवाले से, मैंने सुबह स्क्रॉल करी थी फेसबुक पे, एक शेयर कोई पोस्ट थी, उसमें जो शेयर लिखा है ना कि डर से बंद कर दी नफ्सियात की किताब, दैट आई क्लोज द साइकोलॉजी बुक बिकॉज पागल होने की सारी अलामतें मुझ में थी. और कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जस्ट थिंक ओ ये तो हमें भी है, यू नो, वी आर जस्ट पागल बिकॉज वी रेड अ बुक डिस्क्राइबिंग द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड वी थिंक ओ ऑल दीज आर विद इन अस. सो ये क्या है, हम हमेशा हंसते क्यों आए हैं साइकोलॉजी. तो रेंज तो शायराना पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ दिया ना, लेकिन हकीकत है, बिल्कुल. अब होता ये है कि if you talk literally medical or psychiatric terms or psychology terms, each one of us mental health. और अब मैं अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ पागल का लफ्ज़ नहीं है कहीं भी. ये हमने ये सोसाइटी ने लफ्ज़ बनाया हुआ है. पीपल हैव इलनेस है या डिफिकल्टी होगी या सिम्टम्स होंगी, डिफाइंड वर्ड्स, राइट. लेकिन अगर हम लोग सिम्टम्स को देखें तो हर शख्स में ये फैक्ट है, हर शख्स में कुछ ना कुछ जरूर है. एंगर ले लेना, एंगर कौन बंदा है जिसमें एंगर नहीं है? सैडनेस 100% तो नहीं ना, आप ये कह सकते हैं. नहीं, हर बंदे में है कि टू सम एक्सटेंट. सैडनेस है, फॉर एग्जांपल सैडनेस हम होते हैं सैड, लेकिन हमें अच्छी खबर मिल गई किसी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, सैडनेस नॉर्मल है. लेकिन अगर सैडनेस बढ़ जाती है, बंदा 2 हफ्ते के लिए उसको कुछ भी तो मैं उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है. इतना सा फर्क है. सो मेंटल इलनेस इज नॉट क्वालिटेटिव कंडीशन, दे आर क्वांटिटेटिव. लेकिन अगर आप कैंसर वार्ड में जाते हैं, फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक वार्ड में जाते हैं, उसमें वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल में नहीं हैं.
जब हम मेंटल इलनेस में जाते हैं, हमारे पास जो मरीज आते हैं उनमें वही चीज़ें हैं जो मुझ में हैं. As a human, we have so many moods. Exactly. Sad mood. So this is just proportion. This is a part वो of क्या है, the गालिब का psychology. शेर आपको याद है, वो ना ना नासर का इतदाल में होना और इतदाल से गिर जाना. बस वही हाँ. है। So as long as they are in an order, ठीक है. हमारा फॉर एग्जांपल सैडनेस है, हमने बच्चे पे थोड़ा डांट भी किया, उसको प्यार भी कर लिया, बच्चे को उसको गाइड करने के लिए आपस में दोस्तों में गिला शिकवा भी कर लिया, फिर ठीक भी हो गया. ठीक है ना, ये चलती हैं चीज़ें. When this becomes out of proportion, ठीक है, ग्रज बना लेना फॉर एग्जांपल, और हम किसी के बारे में इतनी शक्की हो जाना कि वो निकले ना शक ज़हन से, then becomes problematic. Yeah, ये चीज़ है. Abuse and addiction within families. We talked about community leaders, that we should have more like doing something as a community, but what should individuals do as parents, as family? This is the question I was hoping to right from the beginning. So Yeah. because the most important, again I will say, you are for example in the house, the first time you notice, the first step you need to take, ask the young person, come on beta, let's talk, kya baat hai? You know, just listening here, a sympathetic approach, right? The more you give listening ear, the more they will be able to open up. The more they open up, the communication will be better. The communication is better, then that will give rise to lots of channels, how you can help them, how they might be going through some bullying in the school, they might not be able to speak to you, and they are trying to cope with this. Some help. And sometimes it's like you say, it's peer pressure, and I know like Some peer pressure. Sometimes some मेरे दूसरे दोस्त हैं, my other friends are doing this. Why can't I do, mom? So similarly, sometimes they say, oh, because you know my other some problem in the family, for example, that is going on. So the more you give them listening ear, the approach is non-judgmental, right? Very very caring approach. You're all caring, but we ignore some certain things. We think caring is उसको वक्त पे रोटी बना के दे दी, कपड़े धो के दे दिए. But this is not. Caring is your time, your ear. क्योंकि उसको पता है बच्चे को, if my mom knows this, she will be mad at me, so that start hiding things. और dad को नहीं बताना, so start hiding things. Dad के पास time ही नहीं है, he doesn't bother. He thinks I'm provided house and provided car and things. Then it becomes problem in affluent societies, because their societies or their parents may have been very very busy, highly successful, and they have chauffeurs to drive to and back from school. Don't know, they don't have time for their kids when they need it. So and basically sometimes I know like they said, sometimes you find बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो यंग जनरेशन में काफ़ी इम्प्रूव हो रही बढ़ रही है, और उसका और जैसे इरफान ने कहा है, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में. तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी यंग जनरेशन कैसे कर रहे, क्यों इतना मेंटली इल हो रही है. सो रीज़न कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है या क्या है? क्योंकि मैं अक्सर टैक्सी यूज़ करती हूँ और टैक्सी ड्राइवर मुझसे कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं, देखिए हम रात को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, और हमारे बच्चे दिन भर मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं और खाते हैं और सोते हैं, और या फिर वो आमतौर पर इस किस्म गाने सुनते रहते हैं. तो ये कितना कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, और इसको कैसे ब्रेक किया जाए, मतलब कैसे we develop a self-help group and involve Maulvis as well and give them a lead and make them to understand what is a cultural conflict. और यंग डॉक्टर्स मुझसे कह रहे हैं, जबकि हम कहते हैं 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है, वक्त पे पढ़ो, तो यंग डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, हाउ कैन वी कम टू डू द नमाज. सो इसमें मौलवियों को थोड़ा अच्छे तरीके से, या जो भी रिलीजियस लीडर हैं, ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि इस्लाम ने कहा नमाज ज़रूर पढ़ो, लेकिन कज़ा भी आके तो how we can help our second or third generation, and how can we develop a self-help groups along with the Maulvis and like Farzana and other people, and you come and explain to them
what is the reason why this second generation and third generation is in a conflict. We shouldn't blame them for mental health issues because of the cultural conflict, because of everything. And young people say that अंग्रेज जो है वो नमाज तो नहीं पढ़ता, चर्च तो नहीं जाता, but he is a human being. And that is my worry, that आने वाली generation को क्या होगा, क्योंकि वो ये तो नहीं जानते कि this whole society is riddled, English society is riddled with गुनाह कबीरा. And really, the gunah saghira is very little, but a part and parcel is. So, I mean, how a psychiatrist can help, how we can develop the self-help groups, and what is the role of a GPs as well. Thank you very much. Thank you very much. I take your comments very helpful, but at the same time, I will try to extract some question from it as well. We try to. First of all, I should be very careful. एक तो हमारा टॉपिक डिफरेंट है आज, एडिक्शन का या मेंटल हेल्थ का आ गया, राइट? एंड इन द मिडल ऑफ दैट रिलीजियोसिटी, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, लेट्स लीव इट असाइड फॉर अ मिनट, प्लीज फॉरगिव मी, अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, right? We're talking about health today. We're talking about health. And namaz doesn't mean if somebody is in the middle of surgery or they're driving a lorry, they can do it afterwards. That's a very different topic. Could you just tell us a little bit more about vaping, please? Because it's becoming. Can I answer that question first? Okay, sorry. So your question was mainly, I will briefly touch that why the mental health, what are the mental health issues, or why is it in our community, this perspective. I think you touched upon this cultural word culture came again and again. So we need to see that how we are different, how we can be, for example, the taxi driver who works the whole night, right? And when he goes home in the morning, he will have to sleep to catch up. He's making money for the family, but he doesn't have time, which is the most important commodity, right? So when he doesn't have time, that means he doesn't have time for, enough time for kids, doesn't have enough time for wife. They will have interaction, very brief. So quality time, right? So this is one of the main factors. When you don't have a quality time with the family, quality time, I call it, right? That's very important to keep things in perspective, in order. You need to have a break at least weekend. Our taxi driver, some brother in the takeaways, they will make money but don't take a break. 7 days a week. That's not life. And once in 6 months, no. 3-4 साल बाद पाकिस्तान चले जाएंगे, 3 महीने के लिए 3-4 साल बाद. You need to have a break. Allah subhanahu wa ta'ala, okay, I'm touch it, non-religious point of view. They have Friday prayer, because it's a break. In every religion, there is one day when you have to have a break from work. When you gather in the masjid as a community, so there is a medical, physical reasons behind that, because that is protective factor for our brain. Then we have annual, festivals, our celebration. And normally in our society here, every 2-3 months, you take a break, 1 or 2 weeks, holidays. दूसरे मुल्क नहीं जा सकते, यहाँ कहीं, या बच्चों के साथ, जब बच्चों की छुट्टियाँ. So this is one of the main approach, preventive measure आप कह लें, for mental health as well, to avoid addiction, to so many other community. If you, I'm not touched it, if you go take statistics in the prison population, unfortunately, in BAME communities and Asians, Pakistani communities, quite high. Disproportionately, as we see in over here, prison representation is more, which shouldn't be like that. So ये इसको मैं briefly touch करूँगा कि हमें उस भी अपनी values, हमारी values जहाँ पे ठीक है, जो problem है हमारे, for example confidentiality कह रहे हैं कि वो क्या करेगा, वो क्या, लेकिन we have a strong family values as well. We can use them positively, and then we can extend that, and we can talk about this on a different time.
Can I just pass one comment? Can I ask the babe आपने पूछा था? इनसे Sorry, पूरी इनका जवाब the same you. No, what you just said, I agree with you that I think firstly we should educate the adults, the parents, and it's very, very important to have that strong family values where the mum and dad have to try to understand what our kids go through when they go to school, when they go to colleges, and don't impose our culture so much on them. They get confused and they get under stress because they're not sure where they stand. Because they're having two cultures. They're coming home, they've got different culture. Yeah. Going out, they've got completely opposite culture. I can give you example, live example from my practice. I have a lady who has mental illness. That is, mental illness exists. Which mental illness has to affect somebody like your cancer. Sometimes you have to have a stomach problem. Similarly, mental illness, some enduring mental illness issue. This lady has a problem. Her husband is on taxi the whole night, and the daytime I don't know what is their interaction, but she comes to the clinic obviously 10, 11 or daytime whenever the clinic, and one day I asked, where is your husband? She says he's sitting outside in the car. So he drove her to the clinic, but he did not participate in the consultation. He was sitting in the car outside, and once I said no, bring him in and ask him question. He was very secretive to answer the questions. I don't know, might you can guess what are the reasons, because he's working the whole night. No, apart from stigma, he's not declared, undeclared work. Exactly. And one day I went to one of the takeaways in Burnley, and I ordered something, and I realized the person came from the kitchen. He was my patient, and I actually pretended not to know, because obviously you have to respect. And he knew. And then he went, and when the next day or third day when I in the clinic, you ask him, he says, no, Dr. Saab, I can't work, I have nothing, I have no money. So these are, and he's mentally unwell, but he was stable. So these are the issues which you have to be very open. We are living in an open society. These days it is very difficult to hide things. You start hiding now, or even historically, the problem significant or the major problem, you will agree, ma'am, when you start hiding things, covering things, you can never. क्या कहते हैं हम कहते थे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है. Can I add something? Yes. जैसे अभी बात हो रही है ना, I'm just gathering one point के दो तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. यानी वो लोग जो ड्रग एडिक्टेड हैं, उनकी वो शायद जैसे आपने कहा कि पॉवर्टी और जिस क्लास से मुताबिक रखते हैं, बिजी हैं और पेरेंट्स जो हैं तवज्जो नहीं देते, अटेंशन नहीं करते, तो बच्चे को इजी लगता है ना इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना. सो वन क्लास इज़ दैट जो कि ड्रग या जो भी ये चीज़ों को एडिक्टेड है. एक और क्लास है जो हाईली एजुकेटेड है, एंड दे यूज ड्रग्स, कैनबिस, मशरूम्स, ऑल सॉर्ट ऑफ गुड. वो उसको किसी अपने माइंड की क्लैरिटी के लिए यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड इवन दे आर नॉट एडिक्टेड टू दैट ड्रग जो भी वो यूज़ करते हैं. तो ये सारा ऐसा लगता है चक्कर जो है ये एक क्लास डिस्टिंक्शन का है. जहाँ पॉवर्टी है, जहाँ पर इलिटरेसी है, वहाँ पर आप किसी चीज़ के फ़ायदा भी नहीं ले सकते. यानी अगर फ़र्ज़ करें, ये आपको पता है, सबको पता है, ये सम ड्रग्स ऐसी हैं जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं. इट मीन्स दे हैव सम थिंग टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी. जब ह्यूमन हिस्ट्री देख लें, वहाँ पे ड्रग आपको किसी न किसी चीज़ में मिलती है. तो क्यों है ये? कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे भी हैं. लेकिन जो लोग इसके एडिक्शन, आपने कहा दो यूज़ किया था ना वर्ड बिगिनिंग, एक तो ड्रग एडिक्टेड एंड व्हाट ड्रग यूज डिपेंडेंट. हाँ, तो वो डिपेंडेंट नहीं होते, जो मतलब जिनकी अप्रोच सही है टुवर्ड्स, आई डोंट नो, मे बी ये लोगों को लगे कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन देयर आर some people like this. You might first of all, the advantaged communities, we were talking about, but advantaged communities, highly affluent, they use it, but they're different perspectives. For example, the youngster adolescent in the school, यहाँ पे अभी पाकिस्तान में जाकर देखें, some of the private schools or the people highly rich, they send their children. So what is their curiosity? There is always young mind has a curiosity. So this thing is in the society, the other person is using, let me use it. Curiosity, peer pressure, sometimes it's class में, let's have a party. थोड़ी drug distribute कर रहे हैं. So these sort of, they factor exist.
राइट। आपका दूसरा पॉइंट था कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है, इन द सोसाइटी, इन द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, बट इट डजंट मीन दैट द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री यू कैन कंडोन देम। ह्यूमन हिस्ट्री में तो अल्कोहल भी चल रहा है, फिर एक वक्त पे अल्कोहल हराम होगी, शराब वाई हुई? सबने कहा है कि देयर आर बेनिफिट्स एज वेल, देयर आर रिसर्च, अब ब्रिटिश उठा के देख लें, बट लिटिल बिट, बट समथिंग विच इज डेट्रीमेंटल, विच इज डेंजरस, ठीक है ना, व्हेन इट गिव राइज, इज गेटवे ड्रग, गिव राइज टू डिस्ट्रक्शन, you are asked to, it is wise to avoid it, isn't it? Otherwise you use so many things करते हैं, तो it doesn't give its green light, you know what I mean? And no doctor will advise, you say doctor's advice, unfortunately, sorry, I would disagree. No doctors should, if anybody has advice तो plant drug ले लो, जो drug illicit है वो illicit। वो क्या CPD oil होता है sometimes in some medicine? No, that is not a drug. No, not drug, but like it's derived from. I said they prescribe it for medicinal reason. There are proper research. They are measured. Even heroin, देखें लोग करते हैं ना, but it is diamorphine. When it was invented in Second World War for pain, as a painkiller, the soldiers were being injected with this diamorphine, and when injection comes from a medical community, that means it is prescribed so many. This and this. I had one question. I'm working with the Manchester City Council, and we look after people. They are very vulnerable sometimes, autistic, learning disability, and especially for people who have some physical disability. We have one patient. He was just moved from the hospital. You heard maybe it's MS condition of the MS. Yeah. So. He was very painful. Sometimes उसकी हालत जो थी स्टाफ को भी नहीं देखी जाती थी, लेकिन वो उसको था कि वो कंप्यूटर यूज़ करता था, अपने जो है उसके पास स्पेशल इक्विपमेंट थी, तो वो उसको टच करके वो देता था, और जब डिस्ट्रिक्ट नर्स या डॉक्टर्स उसको विजिट करते थे तो वो उनको बताता था कि मुझे ये चाहिए, तो वो कहते थे कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ये जो है हमें स्पेशल मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, बेस्ट इंटरेस्ट मीटिंग, उसमें ये डिसीजन होगा। वो डिसीजन लेते लेते टाइम हो गया, फिर उसके लिए एक स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन आई फ्रॉम उसके कंसल्टेंट की तरफ से, और वो ड्रग जो थी वो कंट्रोल ड्रग कहलाने लगी, जिसको हम बहुत सिक्योर किनोपी की आज कहना बस कि कुछ किस्म थी, कुछ ऑयल था, अंडर द टंग उसको कुछ ड्रॉप्स देते थे, लेकिन जो 2 लोग होते थे, 2 स्टाफ मेंबर सुपरविजन में देते थे, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं नहीं देती थी, लेकिन मैं पार्ट ऑफ टीम थी तो मुझे पता था, लेकिन यही होता था कि समटाइम मैं एज अ विटनेस उनके साथ जाती थी, स्टाफ के साथ, कि क्योंकि वो कंट्रोल ड्रग थी, और आपको पता है कि 2 लोग उसको देते हैं, एक विटनेस होता है, एक एडमिनिस्टर कर रहा होता है। तो ये चीज़ मैंने देखी है, जैसे अब आप बातें कर रहे थे तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, समटाइम कुछ बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, उनको नीड होती है, और समटाइम लोग एडवांटेज लेते हैं। Exactly, this is because we are not talking about actually a clinical setup at the moment. We're talking about a community perspective. अब देखें, इसकी एग्जांपल मॉर्फिन है, it's a very purified form of opium, morphine. Also the control drug. Yeah, control drug. Yeah. We prescribe people for severe pain, terminal pain. Yeah. Morphine is prescribed. Diamorphine is heroin कहते हैं. Diamorphine is prescribed. Then CBD, फिर ये नहीं है ये. उसके अलावा मैं आपको एक और interesting example देता हूँ. इंसुलिन आपने सुना होगा. We use in diabetes. I use insulin, ठीक है. अब जो healthy है माशाल्लाह, I hope you don't have diabetes. आपको 2 यूनिट इंसुलिन के इंजेक्ट कर दें, you will be collapsed, right? So this is, and when it is needed, then we have to have it. So this is clinical setup is entirely different. We will be, it is, so उस वक्त हमें कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ जाती है, ठीक है? तो उस सूरत में, और ये जो हम ड्रग्स की बात करते हैं, दूसरी इन वाइडर टर्म, अब हाँ, एम्फेटामिन्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो लोग ओपियम या हेरोइन का इलाज करवाने आते हैं हमारे पास एडिक्शन में, सो वी गिविंग देम सब्स्टिट्यूट, अगर वो नहीं छोड़ सकते ना, सब्स्टिट्यूट है उनकी मेथाडोन। सो मेथाडोन इज कंट्रोल ड्रग, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन अ वेरी स्पेसिफाइड जो मिलीलीटर है, और दो लोगों से स्क्रूटिनी होकर प्रिस्क्रिप्शन जाती है, एटसेट्रा, एंड यू हैव टू हैव अ स्पेशल like certificate from Secretary of State to be able to prescribe that. Not every doctor can prescribe.
and normally in the street it will be illegal. ठीक है. उसके अलावा dexamphetamine एक चीज़, sometimes we also use methylphenidate for ADHD. So that is form of amphetamine, and dexamphetamine we also prescribe. But if it is on the street, it is a stimulant drug. It is illegal. End of society, but sometimes in the higher upper end society there's more drug abuse that we don't acknowledge because it's brushed under the carpet. So my point of view is that we talk on statistical point of view, more kind of likelihood. So Asian communities, this is more likelihood. Otherwise, we alhamdulillah, we know sometimes there is a wedding, for example, out to the Nawab restaurant, everybody are in BMWs and Mercedes, where it is, alhamdulillah. But overall, if you see it collectively society, then we are talking about that, where are the issues. Yes. अवेयरनेस नहीं है, आई थिंक हमारे में ना Exactly. अवेयरनेस नहीं है और हाइडिंग जो है ना उसको ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं. इस तरह मसला हल नहीं होता. As long as transparency, open up. और तो वो नहीं किया ना, एजुकेट नहीं करने दिया ना इस दुनिया ने. उन्होंने कहा कि औरतें मतलब बर्तन धोने और इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, लिहाजा डोंट नहीं अब तो उससे आगे बहुत पुरानी. तो अभी तो वहीं पे खड़े हैं ना इस सोसाइटी में भी, यहाँ आकर भी 25 सालों से. Sacrifice usually her question is. No, it wasn't the same. But I invited you. You sacrifice your time. No, I wanted her to just ask because Okay, please. What she said was relevant to that lady. So my question was relevant to Rahat's, which she asked. She was the first one to ask about vaping because it's becoming very popular. I want to know: is it harmful or is it just a fashionable? It is what harmful. is it? It is fashionable but harmful. Is it got something substance that's addictive? What's the harm in it? Yeah. So only thing, the flash or because it is the only thing we are not burning a cigarette, right? Here in vape, there is still nicotine in it, which is addictive, which can cause respiratory problems and heart problems. Still the damage is the same, and it is highly addictive, nicotine, for which people vape. The other thing is now it is coming through battery operated and the chemicals, because the nicotine is a liquid, so use So then there are other chemicals used in it. Chemically I don't remember the names, but there are two very dangerous chemicals in it. So vape has never been easy. It's just a fashion now. Everybody goes and I'm vaping, I'm not cigarette. It's becoming fashionable. So it's not safe, especially for kids, for children. I mean teenagers. ठीक है? तो उसमें बिल्कुल उसमें नहीं जाना आपने. और अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी स्ट्रिक्ट हो रही है. Yes, because I was very surprised. So many people, young people are. Now the business, especially business, you go to malls and supermarkets, special shops. And there are shops open, everywhere. Yeah. Sorry, quick. आपके जो पॉइंट्स है ना उसको मैं मेन पॉइंट जो मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट है और आपने इसको टच भी किया है. couple of things कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स और जो मॉस्क के लोग हैं उनको ट्रेन होना चाहिए. ये हम लैक कर रहे हैं, ठीक है. और जो इम्पोर्टेंट बात कि हमारी जो मदर्स हैं, हमारी मदर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है. बिकॉज जो रूट कोज है ना वो भी वहीं से शुरू हो रही है कि जब मदर्स अपने बच्चों को सही गाइड नहीं कर पा रही शुरू एज से, एंड दे कांट सी द साइन. जब हमारे बच्चे राह से बेराह हो रहे हैं, मदर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को किस तरह लेके चलती है. सो दैट ब्रिंग्स माई पॉइंट टू लाइक हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आई विल हैव अ वर्ड विद फरजाना. हमें इंडिविजुअल की भी बात हुई कि हमें सेल्फ इंडिविजुअल हम किस तरह इसको अवेयर करें. आई थिंक वी नीड टू ट्रेन आवर मदर्स. और हमारी मदर्स को ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उनको एजुकेट के अलावा भी उनको प्रैक्टिकलिटी से भी अवेयर होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दिस. Absolutely, but I think this group is doing very well on this point. This is basically awareness for education. Sorry. हम इसको ना मदर फादर की डिबेट बना सकते हैं, बट प्राइमरी नहीं फादर का भी रोल होना इसमें एब्सोल्युटली आई एग्री. आजा के बाद माँ के ऊपर गिरती है. आपके पास टाइम नहीं होता, इज टू बिजी वर्किंग. I agree with you. Doctor's upset. The father is too busy working. He's got no time. But the father needs to take out time to give to his wife, so to share what's going on. मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रही. मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रही. मैं ये We have a different roles, no? We different. Every role is important.
Mother's role is important in a different way. Father's role is different in another way, but very important. Both roles are. Ma'am, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाहती थी कि childhood trauma. So you cannot estimate how far. Can Farzana book you for a whole year? For the whole year. Definitely. You come and you get, because these are the things, very basic things which we women should understand. We can definitely, you can make a list of some topics. Yes. But respectfully, I think you are more experienced, all of us, and you know, because your role is very experienced. I can only, occasionally I can come and speak to you, but I would like you to take the lead because self-harming among young Asian girls. all these very important And issues. it is very important and You said very rightly. Everybody, mother and father, mother, even when you are in joint family, other people have some. Still, we have some people living in joint families. one thing which I have a very little knowledge, I would like to have some your views about autism. Autism. Because autism is little bit on the increase as well as bipolar. We can go systematically, we cannot deal everything Bipolar today. as well. Is vape and shisha have the same side effects? I think shisha is purely tobacco, as far as I understand. So is it a big difference? Yeah, वो Because भी it comes in flavors, that comes in वो भी flavors. comes flavors because Yeah. flavor उसमें ऐड कर देते हैं ना Yeah. उसको. So it's Yeah. so which one is more harmful? Harmful and less or more, we leave that debate. Something is harmful, small or more, whatever is harmful is harmful. Yeah. And सबसे बड़ी बात है start करें. It is costing so much, यहाँ से कह लें, you save money, बच्चे को कह दें या बड़े को, यहाँ से शुरू कर दें. Health, अगर health conscious है तो health से शुरू कर दें. But it is detrimental in any way. Because after shisha, it looks like vapes the next. She loved to shisha, and whenever I say, "Oh, you wasting your money," she say, "Oh, this is just one of I have entertainment." What are you saying? I'm wasting your money. I'm working hard for my entertainment. I'm so kindly interested in this topic, but I think you will accept my request for I'm always more often to find Right. out so that we can save our second and philosophies, some approaches entirely take addiction as a behavioral or social problem. It is. But if you take it from a medical point of view, that means be more understanding, be more supportive rather than, criticizing. Because, it's human nature, whatever. Even if a criminal person, you start criticizing them. And what is we're living in British society, even jail culture, they're trying to their classes, their psychological, counseling to empower them to, it's not, imprisonment is one sentence, but being in prison, they try to support them, try to rebuild their career. That is what I mean. So we should all have that approach. Thank you very much. Thanks for the very knowledgeable session, and really appreciate, and thanks to everybody for participating very warmly in it. And I do hope that you will come again to our session every month. We're doing that, and thank you so much again. Thank you. Thank you for inviting me.